जी, कैसे हो? हमारी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि व्हाई डेटा इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अस और व्हाई SQL इज़ वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी आल्सो लर्न दैट हाउ SQL कैन हेल्प टू गेट योर जॉब एंड हमने ये भी सीखा कि विदाउट SQL व्हाई यू कांट सर्वाइव इनटू द आईटी वर्ल्ड, राइट? हम इस वीडियो में हम सीखेंगे how SQL improve your productivity, number one. Number two, why SQL is very easy to learn. Okay. And number third would be why SQL is future proof. I mean, future proof means why SQL cannot be replaced. I mean, कोई भी टेक्नोलॉजी कभी भी आ जाए, इधर इट इज AI, इधर इट इज पाइथन, इधर इट इज infrastructure or cloud computing, anything. But SQL is very important. So हम यही सीखेंगे आज कि SQL आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे improve करती है, नंबर वन. नंबर टू, ये how much it is easy to learn as a beginner. Okay. And number third would be how this is future proofed. So let's start. Imagine you are working in a company and आपके मैनेजर ने आपसे बोला कि ये एक एक्सेल फाइल है, ओके, एंड यू हैव टू वर्क अपॉन इट एंड इमेजिन वो सीक्वल जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, आई मीन बिकॉज इट हैज ह्यूज डेटा, नंबर वन. नंबर टू, उसमें आपको मैनुअल एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ेंगे. नंबर थर्ड, चांसेस ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है. मैं बोलूँ कि सपोज आपके पास एक एक्सेल है जिसमें 60 रिकॉर्ड्स हैं, आई मीन सॉरी 60 कॉलम्स हैं और उसमें लैक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर द कंपनी बिकॉज उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी है. उसमें क्रेडिट डेबिट इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी एंड इन द एंड जो लेजर में जाके मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई देगा, वो वाला डेटा है. नाउ शीट इज वेरी ह्यूज, it is working very slow, and you have to be very specific in terms of you can't afford the error, right? So how you will do it? You will get frustrated because for a managing a single Excel, you will require at least 3 to 4 days. Now अभी हम AI की बात कर रहे हैं and world is moving very fast, and आप एक Excel में वर्क करने के लिए 3 से 4 दिन लेंगे. It is fair enough? No, not at all. It is not fair enough. So that's why SQL come into the picture. How? What you have to do it. I mean, आपने वो डेटा एक लोकेशन पे रखा या उसको डेटाबेस में स्टोर करा दिया. नाउ SQL, what SQL can do it on a single select statement आपको मिलियन ऑफ रिकॉर्ड्स ला के देगी. आप उसमें फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, राइट? आप डेटा के अराउंड प्ले कर सकते हैं एंड आप डेटा को अपने सामने देख के उसको वैलिडेट कर सकते हैं एंड उसमें ना तो कोई परफॉर्मेंस इशू होगा. एंड this is just for 30 minutes. I mean, check your ROI. I mean, कोई काम आप 4 दिन ले रहे थे एंड आप उसने उसको 30 से 40 मिनट्स में फिनिश कर दिया. See your values, man. This is how SQL works. This is how it, I mean, आपका जो डेटा है उसको स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेके आएगी एंड basis on your operations, it will give you desired output within a second. That is how IT works. So that's why SQL is very important. Now we will move further. How does it is improve your productivity? Because आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई, राइट? आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है. नंबर थर्ड, अब डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है बिकॉज आपने एक बार सीक्वल बनाई, राइट? उस सीक्वल को आपने सेव कर लिया कहीं पे भी एंड नेक्स्ट टाइम जब सेम आपके पास फाइल आएगी विद डिफरेंट रिकॉर्ड्स, आपको बस क्वेरी रन करना है एंड योर डेटा विल बी कमिंग विद इन अ सेकंड एंड आप दो लो भाई, यूज कर ले इसको. So आपने within a second, you just go to your manager and see, sir, this is my uh, output based on your input. So he will be more than happy. So that's how you work, man. I mean, this is the way to deal with it. Now,
Next, which we were saying that how is I mean, how can we learn SQL as a fresher or as a if you want to change your career? It is very easy. I mean, SQL is not very difficult. It is just a syntax. Yes, it will take at least 30 days to learn it. But if you invest 30 days of your life into SQL, you will never regret it. Because आप एज एंड व्हेन जैसे जैसे आप करियर में आगे बढ़ेंगे यू विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ सीक्वल विदाउट सीक्वल यू कांट सर्वाइव इवन आई बैट यू आज के डेट में जो L1 इंजीनियर्स है ना उनकी जॉब ही फिनिश हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ एआई सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग AI can work on behalf of you, but AI can't imagine. So best AI is your mind, and that's how you have to use it. So use it in SQL. इवन आप डेटाबेस इंजीनियर हो, आप क्लाउड इंजीनियर हो, आप एआई इंजीनियर हो, आप डेटा साइंटिस्ट हो, whatever you are it, SQL is a first step. So how do we learn it? It is very simple. Next is how uh, how do we learn it? Basically, आप thread operation से start करिए, insert, update, and delete and truncate. Okay, truncate is one of the we never recommend to use truncate. Then after आप uh, जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं या फिर हमारे फंक्शंस होते हैं लाइक अरिथमेटिक फंक्शंस ग्रुप बाय फंक्शंस या फिर स्ट्रिंग फंक्शंस whatever it is just try to use it so once you have done with it at least your 75% work is done now how SQL is next step is we have done it हमने अभी तक जो सीख लिया उसमें था कि सीक्वल से हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ती है ओके एंड नंबर टू हाउ टू लर्न द सीक्वल नाउ वी हैव टू कम ऑन द थर्ड थिंग which is how does it future proof means why it can't be replaced see every company आज की डेट में डेटाबेस यूज करती है right? Whether it is Oracle database, whether it is Postgres database, whether it is MySQL database, whether it is SQL Server database, or whether it is a cloud database. डेटाबेस सभी के पास होगा अब चाहे आप आप अमेजोन पे गए आपने ट्रांजेक्शन किया आपने शॉपिंग करी तो वो डेटा कहीं ना सेव हुआ राइट आपने बैंक गए बैंक का लोग आपने बैंक में लॉग इन किया आपने कोई ट्रांजेक्शन किया तो वो डेटाबेस में कहीं जाके सेव हुआ इवन इनफैक्ट आप बिग बाजार जाते हैं या फिर किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आपने जो ट्रांजेक्शन करा आपने जो कपड़े खरीदे आपने जो भी शॉपिंग करी क्लॉथ्स की वो कहीं ना कहीं तो कंपनी के डेटाबेस में सेव हो रही है राइट सो database is everywhere so every company has a database and in every database if you want to retrieve the data SQL is there you don't you I mean SQL is the only option to retrieve the data without SQL you can't retrieve the data so that's why SQL is very future proof so my final word is so my final word is uh, it is SQL is very easy to start and powerful impact है इसके in your career and it is very essential for your growth. And if you are serious about entering into tech, yeah, if you want to change your job and you are as a fresher, so guys, it is very important. Believe me, I'm telling from my experience, it is very, very important. So learn it and make your career very fast. Thanks.